Good morning, everyone. I hope I'm audible and visible to all of you. Okay, so let's start today's session. So, good morning, everyone. Welcome back to our channel, RostrumLegal. So, today we are here on 11th of October 2024 in the class of legal news analysis, and today we are going to analyze the judgment of Supreme Court and different high courts. Okay, so let's start with the point number first. In the point number first, we are having Allahabad High Court judgment, in which the Allahabad High Court quests the case of cruelty lost against the husbands related to the sexual incompatibility of the couple. What is happening in this case? The wife imposed allegation on the husband that husband involved in unnatural offense with the with his wife, with the complainant. क्लियर है? तो इनका बोलना ये है कि साहब इस her husband is an alcoholic, and after consuming liquor, that her husband committed unnatural offense with that lady. क्लियर हो रहा है? तो ये जो एलिगेशन इन्होंने लगाए थे कि साहब वो जो है इनके आसपास घूमते रहते हैं और काफी जो है जो मतलब अनएथिकल प्रैक्टिस जो उन्होंने उनका बोलना है था कि साहब देयर शुड बी सम like respect for each other. If we are in a relationship, even in a husband and wife relationship, then there must be a respectful relationship for each other. ठीक है ना? Each of the spouse. So what happened in this case? Let's see. So Allahabad High Court ने क्या बोला कि we are going to quash down the case, the criminal charges which were basically imposed by the wife against her husband. ठीक है ना? तो क्या थे वो charges? एक बार देखेंगे. In the case Pranjal Shukla and others versus state of UP and another. Good morning, Yasha. Good morning, Priyanshu. Very good morning, guys. So, a petition was filed before the High Court by the husband for questioning the criminal proceeding initiated by his wife. तो वाइफ ने जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनिशिएट की थी, ठीक है, जो कंप्लेंट फाइल की थी, दैट वाज चैलेंज्ड बिफोर द हाई कोर्ट एंड दे क्लियरली कंटेंडेड बिफोर द हाई कोर्ट, सर प्लीज क्वेश डाउन दीस प्रोसीडिंग्स. क्लियर हो रहा है? दीस क्रिमिनल प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 482 ऑफ सीआरपीसी. The couple got married in 2015, after which the man and his family allegedly made dowry demands from women. So as per the prosecution, कपल की शादी 2015 में होती है और उसके बाद ही ये जो है क्या करना शुरू कर देते हैं, डाउरी डिमांड करना शुरू कर देते हैं, दहेज मांगना शुरू कर देते हैं. ठीक है? Soon after the marriage, she alleged that on non-fulfillment of the dowry demands, she was abused and assaulted. और इनका बोलना ये था कंप्लेनेंट का कि भाई जब इनकी डाउरी की दहेज की जो मांगे पूरी नहीं की गई तो इन्होंने मारना पीटना और जो है गाली गलौज करना शुरू कर दिया, इनको परेशान करना शुरू कर दिया. ठीक है? द वाइफ ऑल्सो स्टेटेड दैट हर हस्बैंड वाज एडिक्टेड टू अल्कोहल एंड हैड डिमांडेड अननेचुरल सेक्स फ्रॉम हर. ठीक है? तो इनका बोलना ये है कि साहब ये बंदा जो है बहुत ज्यादा दारू पीता है, बहुत ज्यादा नशे में रहता है और इनके साथ जो है एनल करने की कोशिश करता है, अननेचुरल सेक्स करने की कोशिश करता है. ठीक है ना? फर्दर she further alleged that he frequently watched porn films and used to roam around nude before her and masturbate. तो इन्होंने बोला कि साहब ये जो है ना, ये जो है पॉर्न मूवीज के एडिक्ट हैं और इनकी जो इनकी जो वो है ना एक तरीके से फैंटेसीज जो है ना वो बहुत ज्यादा अलग है. ठीक है? सो व्हेन शी ऑब्जेक्टेड टू सच एक्ट्स, हर हस्बैंड allegedly tried to strangle her. ठीक है ना? तो जब इन्होंने इसका विरोध करने की कोशिश करी, ठीक है ना, तब इनका जो है गला वाला दबाया गया, इनको मारने की कोशिश की गई हस्बैंड के द्वारा. सो द वाइफ फाइल्ड द एफआईआर अंडर सेक्शन 498A, 323, 504, 506, 509 of the IPC and section 3 and 4 of the Dowry Prohibition Act. ठीक है ना? ये चार्जेस जो है इम्पोज कर दिए गए, कंप्लेंट कर दी फाइल वाइफ ने. The High Court, after looking into the material fact, observed that only general and vague allegations have been made out with regard to the demand and torture for demand of dowry. तो उन्होंने बोला कि सब the allegations are vague and not specific. ठीक है ना? If the prosecution is imposing section 498A, ठीक है ना, then they have to be very specific. They must mention the specific incidents. ठीक है ना? Otherwise, court is not going to entertain your plea under section 498A. ठीक है ना? क्योंकि वेग एलिगेशंस आप नहीं लगा सकते, डिमांड ऑफ डाउरी आप नहीं लगा सकते. यू हैव टू प्रूव द चार्जेस. If you are imposing such like allegations, then you have to prove. It's the burden of proof on the prosecution itself under section 101 of the Indian Evidence Act to prove your case beyond reasonable doubt. But High Court, after looking
into the material fact available, into the evidence available, they clearly said that the allegation which were imposed by the complainant were vague and general. Clear है? So, however, from the close scrutiny of the FIR as well as the statement of the victim, the torture or any assault, if any, is meted out not for any demand of dowry but on the refusal of the opposite party to fulfill the sexual urges of the applicant number one. So इन्होंने बोला कि साहब the reason behind the imposition of these allegations under the Dowry Prohibition Act and under the IPC are basically based on the treatment of husband after consuming liquor, ठीक है ना, while demanding the unnatural sex from the wife. So these are the basically the repercussions and the consequences, or we can say that कि भैया इसके ही परिणाम है, ठीक है ना. ये throwback था कि आप जो है इस टाइप की चीजें कर रहे हो. So I am going to impose allegation of cruelty and dowry that like a dowry demand against you. क्लियर है. सो हाई कोर्ट को बात समझ में आ गई कि ना साहब इसमें कोई भी रीजनिंग नहीं है. The Allahabad High Court, while allowing the plea, while questioning down the plea, said that if a person is made to face a criminal trial on some general and sweeping allegations without bringing on record any specific instances of criminal conduct, it is nothing but abuse of process of court. तो इन्होंने बोला कि साहब अगर हम इस टाइप के वेग और जनरल एलिगेशंस को, if we are going to entertain these allegations, then definitely it is nothing but abuse of process of court. बात समझ आ रही है. तो यहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने काफी सारी चीजें बोली थी इस केस में कि साहब अगर कपल्स जो है वो अपनी सेक्सुअल अर्जिस आपस में सेटिस्फाई नहीं करेंगे तो फिर कहाँ जाएंगे? वो क्या बाहर जाकर अपनी सेक्सुअल अर्जिस सेटिस्फाई करेंगे? These statements was said by the Allahabad High Court in this particular judgment. I hope this point is quite clear. बात समझ आ रही है? Okay, so let's jump on the point number second. In the point number second, we are having Kerala High Court judgment. So in this judgment, Kerala High Court said that the act of referring to a woman as a prostitute may not constitute the offence of insulting a woman's modesty under the section 509 of the IPC. क्या किसी भी women को prostitute बुलाना क्या section 509 को invoke करेगा? हमें ये चीजें confirm करेगा ये judgment. ठीक है ना. हमारा मेन इंटेंशन लीगल न्यूज कवर करने का यही है कि आपको जो जनरल चीजें हैं जो आपको समाज में देखने को मिलती हैं वो आपको पता होना चाहिए कि whether that act should act as a violation of the law or not. Clear हो रहा है? तो भैया यहाँ पर calling a lady a prostitute, whether it amount to invoke the provision of section 509 of the IPC or not. Clear है? तो ये केरला हाई कोर्ट ने बताया है कि भाई हुआ क्या है. लेकिन इसके साथ एक छोटा सा क्लॉज जुड़ा हुआ है कि साहब उसकी प्रेजेंस में, मतलब किसी लेडी को उसके सामने प्रोस्टिट्यूट बोलना और पीठ पीछे प्रोस्टिट्यूट बोलने में फर्क है. बात समझ आ रही है? तो यहां पर क्या हुआ था, ये केरला हाईकोर्ट ने क्लैरिफाई किया है कि भाई प्रोस्टिट्यूट जो है बोलना, इसमें क्या क्या जो इंग्रेडिएंट्स है ना वो देखे जाते हैं. देखते हैं. इन द केस एंसन एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ केरला एंड अदर्स, a petition was filed before the High Court by the accused for questioning the criminal proceeding. So the criminal proceeding was initiated against the accused by a lady, ठीक है ना, for calling her prostitute. ठीक है. So the three men, basically the accused at a flat complex, were accused of calling a fellow member of the residents association a prostitute while speaking to other residents and nearby shop owners, but not in her presence. So basically there are so many people residing in a apartment. तो वहां पर जो एसोसिएशन था वहां पर तीन बंदे जो थे, ठीक है ना, जो तीन एक्यूज हैं जिनके ऊपर चार्जेस हैं कि भाई आपने इनको प्रोस्टिट्यूट बुलाया. तो एलिगेशन ये था कि इन्होंने जो और रेसिडेंट्स हैं उनके सामने और जो शॉप ओनर्स हैं वहां आसपास उनके सामने इनको प्रोस्टिट्यूट बुलाया, जबकि सामने ये चीजें नहीं हुई. मतलब उस लेडी के सामने उससे कुछ नहीं बोला गया, लेकिन हाँ लोगों ने उसको बताया जाकर कि वो तुम्हारे बारे में ऐसा ऐसा बोल रहे थे. ठीक है ना. ये था उस केस के फैक्ट्स. बट तो ये गए, इन्होंने जो है चार्जेस कंप्लेंट फाइल करी कि साहब ये जो लोग ना मुझे प्रोस्टिट्यूट बुला रहे थे. तो बोले आपने सुना? बोले नहीं इन लोगों ने मुझे बताया. तो केरला पुलिस चार्ज द थ्री एक्यूज्ड मैन under section 34 and section 509 of the IPC. The counsel for the accused argued that even if the alleged remark may be defamatory, section 509 of the IPC cannot be invoked. इन्होंने बोला कि पहली चीज ये जो स्टेटमेंट बोला गया है, this cannot be treated as defamatory statement. But even if you are considering the statement as defamatory, in that situation also section 509 cannot be invoked. यहां पर जो women की modesty है उसको लेकर कोई बात नहीं करी. बात समझ आ रही है? क्योंकि उसके सामने कोई बात नहीं हुई. अब the High Court observed that here the first part of the offense is not at all
made out since the de facto complainant has no case that the accused person used the derogative text directly to the de facto complainant, either to be heard or to be seen by her, and the allegation is that the accused stated so to the inmates of the flats and nearby shop owners, and the de facto complainant has no direct knowledge regarding the same. तो इन्होंने बोला कि सब पहली चीज तो ये है कि the statement which was basically conveyed to the complainant was not said in the presence of the de facto complainant, कि उस लेडी के प्रेजेंस में ये चीजें नहीं बोली गई. That's why we cannot invoke section 509 of the IPC. बात समझ आ रही है कि डायरेक्टली कोई भी चीजें कन्वे नहीं करी गई, इनडायरेक्टली चीजें पहुंची हैं. सो वी कैन नॉट चार्ज द अक्यूज्ड अंडर सेक्शन 509. क्लियर है? सो द केरला हाई कोर्ट व्हाइल क्वेश्चनिंग द क्रिमिनल प्रोसीडिंग, तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग को क्वेश्चन डाउन करते हुए क्या बोला? अंडर द सेड चार्जेस, ठीक है ना, व्हाइल क्वेश्चनिंग द क्रिमिनल प्रोसीडिंग अंडर द सेड चार्जेस, तो उन्होंने बोला कि साहब देखिए ये जो चार्जेस इंपोज किए गए, वी कैन नॉट कन्विक्ट द अक्यूज्ड अंडर दीस चार्जेस, बट you can impose other charges. Clear hai? So they said that even though statement alleged to be spoken by the accused person was not intending to be heard by the de facto complainant or seen by her, but to the third party, it may attract some other offenses like defamation, criminal defamation 499-500. The same itself would not constitute an offense dealt in the second part of section 509 of the IPC prima facie. इन्होंने बोला कि साहब सेक्शन 509 किसी भी तरीके से इन्वोक नहीं हो रहा है, हाँ, लेकिन आप कोई और प्रोविजंस को इन्वोक कर सकते हो, ठीक है ना, लेकिन ये चार्जेस नहीं लगेंगे. बात समझ आ रही है? सो दिस इज आवर पॉइंट नंबर सेकंड. इन केस एनी पर्सन इज हैविंग एनी कंफ्यूजन, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा. आगे बढ़ेंगे. In the point number third, again we are having Allahabad High Court judgment, but Allahabad High Court said that police cannot investigate or file FIRs for the violation under the Preconception and Prenatal Diagnostic Techniques Act of 1994. Yeah, we have already visited so many like hospitals जहां पर अल्ट्रासाउंड की फैसिलिटी अवेलेबल होती है. आपने सुना होगा, ठीक है ना, हो सकता है बहुत सारे लोगों ने करवाया भी. आपके अगर प्रॉब्लम्स कुछ आ रही है, पेट में या दर्द हो रहा है, तो उस टाइम पर भी अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है. बेसिकली अल्ट्रासाउंड जो है ना, फीमेल जो प्रेग्नेंट फीमेल्स है ना, उनके लिए ज्यादा बोला जाता है कि वो चेक कराती है कि सही है, फीटस सही है कि नहीं है. लेकिन अल्ट्रासाउंड के थ्रू आप फीटस का जो है जेंडर बता सकते हो, विच इज अगेंस्ट द प्री कंसेप्शन प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स एक्ट ऑफ 1994. कि आप बच्चे का लिंग नहीं बता सकते. जब भी आप जाओगे किसी भी अल्ट्रासाउंड सेंटर पर, तो वहां लिखा होगा कि बच्चे का लिंग नहीं बताया जाता है, ये कानूनन अपराध है. तो ये क्या है? ये मैंडेट है, ये लिखना मैंडेट है. बात समझ में आ रही है? इफ एनी डॉक्टर, इफ एनी पर्सन इन्वॉल्व इन द प्री कंसेप्शन, ठीक है ना, of the diagnosis of the gender of any fetus, then that person should be charged under this particular act. But who is going to take action? Whether the police is having the authority, कौन करेगा? मानकर चलो कि भाई अगर कोई डॉक्टर पकड़ा जाता है, पता चलता है कि भाई आपको कि भाई ये जो डॉक्टर है ये क्या करता है, ये ना बच्चों के लिंग बता देता है पेट में, तो अगर आपको नहीं पसंद आता है तो आप जो है अबॉर्ट करा लीजिए, ठीक है ना. तो मेन कंटेंशन तो यही रहता है आदमी का, ठीक है ना, तो मेन इंटेंशन यही है. तो अगर मानकर चलो कोई बंदा, कोई भी पेरेंट्स, कोई भी डॉक्टर इन्वॉल्व होता है, तो एक्शन कौन लेगा? वेदर FIR शुड बी फाइल्ड अगेंस्ट दैट डॉक्टर एंड पेरेंट और हॉस्पिटल अथॉरिटी, या फिर कुछ और है. तो यहां पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बोला कि साहब एज पर द प्री कंसेप्शन एंड प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स एक्ट ऑफ 1994, इट इज द एप्रोप्रिएट अथॉरिटी हु इज गोइंग टू टेक एक्शन अगेंस्ट दैट अक्यूज्ड, ठीक है ना. पुलिस इज नॉट हैविंग द पावर टू इन्वेस्टिगेट और फाइल FIR अंडर दिस एक्ट. क्यों बोली ये बात, ये देखिए, ठीक है ना. हमने जब भी देखा है कि भाई जो स्पेशल एक्ट्स होते हैं ना, उसमें लिखा होता है कि हु इज गोइंग टू इन्वेस्टिगेट द मैटर, हु इज गोइंग टू डील विद द मैटर, स्पेशल जज होंगे, क्या होगा, किस तरीके से चीजें आगे बढ़ाई जाएंगी, सब कुछ उसमें लिखा होता है, प्रोसीजर प्रॉपर. क्लियर है? इस केस में हुआ क्या था कि FIR फाइल कर दी गई, पुलिस ने इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया मैटर को. आप ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है. यू हैव टू गो बाय द लॉ. सो इन द केस डॉक्टर ब्रिजपाल सिंह एंड वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, a petition was filed before the High Court by a doctor to quash a criminal case registered against him by the state police in 2007. ठीक है ना. तो भैया एक डॉक्टर साहब ने ये पिटिशन फाइल किया. उनका कंटेंशन ये था कि सर आई एम नॉट गिल्टी अंडर द प्रोसीजर व्हिच वाज बेसिकली इन्वोक्ड अगेंस्ट मी बिकॉज the police investigated the matter and filed the FIR in this particular case, who is not having the authority. ठीक है ना. तो प्रीनेटल प्री डायग्नोस्टिक प्री कंसेप्शन डायग्नोस्टिक टेक्निक्स एक्ट जो है, ठीक है ना, उसमें पुलिस के पास कोई पावर नहीं. सो इनका बोला ये था साहब, ही वाज बुक्ड अंडर द प्रीकंसेप्शन एंड प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स एक्ट ऑन एलिगेशन दैट ही वाज illegally identifying the sex of fetus to enable couples to prevent female children from being born.
तो इनके ऊपर एलिगेशन ये लगा था कि साहब ये क्या है, ये भ्रूण का लिंग बता रहे थे, मतलब फीटस का जेंडर बता रहे थे कि जिससे कपल्स को एक फीमेल बच्चा नहीं चाहिए था, तो जिस चक्कर में वो उसको अबॉर्ट कर सके, तो इनके ऊपर ये चार्जेस लगाए, ठीक है ना। इसी रीजन से आपको हरियाणा में बहुत ज्यादा देखने को मिला था, ये हरियाणा राजस्थान में, कि वहां पर फीमेल जो है ना, फीमेल फेटिसाइड जो था, जो भ्रूण की जो हत्या की जा रही थी, अगर पेट में बच्ची है तो मार दो, पैदा हो गई तो मार दो, ठीक है ना। इस पर एक सीरियल भी आया था, ना आना इस देश में नहीं डाल दो करके, एक वो था, एक डेली सोप सीरियल आता था, उसमें यही कॉन्सेप्ट डिस्कस किया गया था, ठीक है ना। तो इनके ऊपर ये चार्जेस लगे। He was implicated after a search carried out at a hospital along with the police on instruction by a तहसीलदार। तो भैया तहसीलदार के इंस्ट्रक्शन थे, उनको मजिस्ट्रेट साहब से मिले थे, ठीक है ना, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब से, और इन्होंने सर्च करी पुलिस ने, ठीक है ना, और जो है इनको जो है पकड़ लाई पुलिस। अब क्या हुआ, द पिटिशनर्स काउंसिल आर्ग्यूड दैट no FIR could have been registered against him for violation under the Preconception Prenatal Diagnostic Techniques Act, since only the appropriate authority under section 28 of the act can file complaint cases and not FIR in such matter। तो उन्होंने बोला कि साहब in these particular matter under the Diagnostic Techniques Act, a police is not having any power to file the FIR. It is the appropriate authority who is having the authority to deal with the matter, to investigate the matter, ठीक है ना। यहाँ पर फाइल FIR फाइल नहीं होगी, यहाँ पर कंप्लेंट रजिस्टर होगी, बात समझ आ रही है। बोले यहाँ पर पुलिस का कोई लेना देना नहीं, लेकिन पुलिस ने यहाँ पर इनिशिएट कर दिया, तो द काउंसिल क्लियरली सेड दैट sir, the procedure which was opted in this particular matter is not justified as per the law, ठीक है ना। so the FIR was lodged by the तहसीलदार who cannot be said to be the appropriate authority। बोले as per this particular act, तहसीलदार is not the appropriate authority who is having the authority to take action against that person, clear हो रहा है, under this particular act। so the High Court noted that in view of Rule 18A of the Prenatal Diagnostic Techniques Rules of 1996, coupled with section 28 and 30 of this act, police authorities cannot be involved for the purpose of investigation of cases under the special enactment as cases under it are tried as complaint cases। तो बोले साहब पुलिस इसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकती, ये चीज हाईकोर्ट नहीं मानी कि साहब जो प्री डायग्नोस्टिक टेक्निक्स एक्ट as well as rules both are clearly saying the police is not having any authority to file the FIR, instead of the appropriate authorities having the power to investigate the matter or to file the complaint, clear हो रहा है। तो इन्होंने बताया कि साहब पुलिस के पास कोई पावर ही नहीं। Further, the High Court said that the police investigation has been specifically barred। It is, however, when any obstruction is created by such violators which cannot be handled without the involvement of the police, only for that purpose, for the assistance of the appropriate authority, the police can be associated। तो उन्होंने बोला कि साहब in emergency situation police can be involved in this matter, और वो भी तब जब appropriate authority उनकी help seek करेंगे। मानकर चलिए appropriate authority want to search anywhere or take action against any person, और वो बंदा जो है वो मान नहीं रहा है, in that situation appropriate authority call the police for the reducing the obstructions, clear हो रहा है, for clearing the obstructions। तो जो ये परेशानियां इनको जो हो रही है उनको हटाने के लिए बेसिकली यहां पर जो है क्या किया जाएगा, यहां पर जो है पुलिस की हेल्प ली जाएगी, क्लियर हो रहा है। तो उन्होंने बोला कि इसके अलावा आप जो है पुलिस की हेल्प नहीं ले सकते। द पुलिस कैन बी एसोसिएटेड विद द इन्वेस्टिगेशन बट इन ऑल केसेस द इन्वेस्टिगेशन हैज टू बी डन बाय एप्रोप्रिएट अथॉरिटी, ठीक है ना। तो आप केवल हेल्प लोगे, इन्वेस्टिगेशन स्टिल परफॉर्म बाय और डन बाय द एप्रोप्रिएट अथॉरिटी ओनली, नो अदर पर्सन इज हैविंग एनी अथॉरिटी, क्लियर हो रहा है। चलिए, द हाई कोर्ट व्हाइल अलाउइंग द प्ली सेड दैट, the Allahabad High Court while allowing the plea said that in considered opinion of this court in view of the specific bar created by section 28 of the Preconception Prenatal Diagnostic Techniques Act, it is not open for magistrate to take cognizance of the offence under this act on the basis of police report submitted after investigation। So agar police is not having the authority to file the FIR, so they don't have any authority to file the charge sheet, so on that basis magistrate is not having the authority to take the cognizance, so it is done by the appropriate authority only। So the procedure which was opted by the police in this particular case was quashed by the High Court। This is the judgment given by the Allahabad High Court। I hope the judgment is quite clear। Okay, I hope the point number 3 is quite clear। So let's jump on the point number 4। In point number 4, we are having a very interesting judgment from the Bombay High Court, which is related to the Maharashtra National Law University (MNLU)। यहाँ पर एक बच्चे के ऊपर एलिगेशन ये थे कि उसने ही अपने फेलो स्टूडेंट को सेक्सुअली हैरेस किया था, ठीक है ना। तो हैरेसमेंट के चार्जेस से उस बच्चे के ऊपर उसको क्या कर दिया गया था, एक्सपेल कर दिया गया था,
ठीक है ना। अब यहां पर हुआ क्या, एक बार देखेंगे। The Bombay High Court upheld the expulsion of a student from Maharashtra National Law University, Mumbai, who was found to have sexually harassed a fellow student at a social event. एक सोशल इवेंट पर जो है अपने ही साथ वाली लड़की को इन्होंने सेक्सुअली हैरेस किया था एक बच्चे ने, तो उसको एक्सपेल कर दिया गया, ठीक है ना। अब ये कहां पहुंचे, महाराष्ट्र, सॉरी बॉम्बे हाई कोर्ट। इन्होंने चैलेंज किया ऑर्डर ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द कॉलेज, ठीक है ना, कि डायरेक्टर ने तो सर मुझको एक्सपेल कर दिया, आप प्लीज मुझे बचा लीजिए। लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या किया, उसको भी अपील किया। पूरा किस्सा क्या था देखिए। In the case X versus MNLU, a writ petition was filed by a student before the High Court challenging the order passed by the Vice Chancellor on the appeal preferred by the petitioner, challenging the order issued by the in-charge registrar, expelling him from the university with immediate effect. ठीक है ना। तो when the charges were imposed on the student in relation with the sexual harassment with a fellow student, the registrar, the in-charge registrar expelled the student with the immediate effect. ठीक है ना। So that was challenged before the Vice Chancellor, but Vice Chancellor also upheld the order issued by the in-charge registrar. Clear हो रहा है। So against which the writ petition was filed before the High Court by the student. ठीक है ना। So allegation of repeated sexual harassment by X against multiple female students were imposed. तो इनके ऊपर लगे थे चार्जेस के साथ, इन्होंने बहुत सारी लड़कियों को जो है परेशान किया है, सेक्सुअली हैरेस किया है, ठीक है ना। और ये भी बताया गया था कि जो सोशल इवेंट्स चल रहे हैं वहां पर लिकर भी सर्व की जा रही है, ये भी एलिगेशंस लगाए गए, ठीक है ना। सो द इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी ICC फाउंड हिम गिल्टी इन 2 इंक्वायरीज ultimately leading to his expulsion. ठीक है ना। So after conducting inquiry, the ICC submitted its report, and on that report only that student was expelled by the in charge. Clear हो रहा है, like registrar in charge, registrar in charge. Clear. Okay. So further, the counsel for the counsel for the student argued that inquiry process was flawed and biased. They clearly said that sir, there is no transparency in the inquiry process, and the inquiry process was flawed and biased, highlighting that the incidents occurred off campus. They clearly said that there's nothing on campus, there's nothing in campus. ठीक है ना, स्कूल कॉलेज के अंदर कुछ नहीं हुआ, सब बाहर हुआ है। If anything happened outside the college, then how can a student can be charged for the act which actually committed outside the college? Clear हो रहा है। So he contended that the expulsion would have devastating effect on the student's future, pleading for consideration of his academic record. So counsel for one of the complainant underscored the gravity. So what they contended, they clearly said that sir, एक बच्चे की फ्यूचर की सवाल है, अगर उसको एक्सपेल कर दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर उसके जो फ्यूचर पर बहुत गंदे इफेक्ट्स पड़ने वाले हैं, ठीक है ना। ये चीज इन्होंने बोली कि सर तो इनका एक्सपोजर जो है वो सेटिस्फाइड किया जाए। काउंसिल फॉर वन ऑफ द कंप्लेनेंट, अब जो लड़कियों के साथ सेक्सुअल हरेसमेंट हुआ था उनके कंप्लेनेंट ने, उनके काउंसिल ने क्या बोला, underscored the gravity of allegation, stating that the petitioner's history of misconduct warranted expulsion. उन्होंने बोला कि साहब जो gravity, the seriousness of the offense should be in consideration while deciding this case, and further the criminal antecedent, the history of the misconduct by the that accused should be in consideration while deciding the case. क्लियर हो रहा है। तो ये चीज किसने बोली, काउंसिल ने बोली। अब देखते हैं क्या हुआ। The High Court, while reducing the period of expulsion, said that, in our view, restricting the punishment of expulsion for 1 academic year, coupled with a future action to undertake community services, would meet the end of justice. उन्होंने बोला 1 साल का कंपल्शन तो जरूरी है, कम कर दिया, पहले जो दिया गया तो उससे कम कर दिया, 1 साल कर दिया केवल, कि इन टोटल आप 1 साल तक एक्सपेल्ड रहोगे। दूसरी चीज, आपको कम्युनिटी सर्विसेज में क्या करना पड़ेगा, सर्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके लिए आपको कॉलेज भी आना पड़ेगा, कम्युनिटी सर्विसेज में हाथ बटाना पड़ेगा, तो ये कहीं ना कहीं जस्टिफाइड होगा क्योंकि आपको सिखाना बहुत जरूरी है। क्लियर है। सो इट फर्दर clarified that while the expulsion was necessary, it was crucial to define its duration to avoid prolonged suffering for both the student in question and the complainant. बोले साहब जरूरी है एक्सपल्जन, लेकिन दोनों को डिसाइडेड होना चाहिए कि किस टाइम पीरियड के लिए आप जो है एक्सपल रहोगे स्कूल से, ठीक है ना। तो 1 साल का इन्होंने पीरियड इनके ऊपर इंपोज किया और इन्होंने बोला कि साहब उसके बाद आप जो है वापस रीइंस्टेट होगे। लेकिन एक और कंडीशन इन्होंने डाली, क्या, द बॉम्बे हाई कोर्ट मैंडेटेड दैट X must not interact with Y during his community service. Y is the complainant, ठीक है ना, और we can say that the victims. तो आप किसी भी तरीके से विक्टिम से इंटरेक्ट नहीं करोगे आप। क्लियर हो गया। जब आप कम्युनिटी सर्विसेज के लिए आप कॉलेज आओगे या कहीं और भी आप मिलोगे तो भी आप उनसे इंटरेक्ट नहीं करोगे। एडिशनली इट अर्ज द वाइस चांसलर टू इंप्लीमेंट रिकमेंडेशन फ्रॉम द इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी
including ensuring the university events do not serve alcohol and that appropriate oversight is maintained to prevent misconduct. तो बोले साहब जो कॉलेज के जो फेस्ट होते हैं, ठीक है ना, या इवेंट्स जो होते हैं वहां पर एल्कोहल सर्व ना की जाए, ठीक है ना, और इस टाइप का मिसकंडक्ट दोबारा ना हो, तो आईसीसी इंटरनल कंप्लेंट कमेटी जो है उन्होंने क्या करी, अपनी रिकमेंडेशन इशू करी, बॉम्बे हाईकोर्ट ने उन रिकमेंडेशन को फॉलो करने के लिए बोला। क्लियर हो रहा है? सो दिस इज द पॉइंट नंबर 4. आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। इन केस if any student is having any confusion, please let me know in the comment section. Meanwhile, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा यार। आगे बढ़ेंगे। In the point number 5, they are having a very interesting judgment from Karnataka High Court. So, Karnataka High Court said that an insurance company must compensate the claimants for a fatal accident even though the vehicle involved did not have a valid permit or fitness certificate. ठीक है ना? मानकर चलिए कि एक वैलिड परमिट नहीं है एक व्हीकल के पास, या फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है, that vehicle is not fit for as per the Indian roads, तो वो इंडियन रोड्स पर नहीं चल सकता because that vehicle is not having the fitness certificate. Even though the insurance company, the insurer of that vehicle should be liable in case of any third party loss, third party violation. क्लियर हो रहा है? ये कर्नाटक हाईकोर्ट ने बोला। हुआ क्या, मानकर चलिए कि भाई एक ट्रक किसी को टक्कर मार देता है, ठीक है ना, कोई बंदा घायल हो जाता है, ठीक है ना, सो एज पर द थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी, आप जो है थर्ड पार्टी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? दैट इंश्योरेंस कंपनी। ये मैंडेट है, आप ओडी लीजिए मत लीजिए कोई दिक्कत नहीं, ओवरऑल डैमेज अगर आपको लेना हो लोन मत लो, लेकिन थर्ड पार्टी इंश्योरेंस मैंडेट है। अगर आपको चलानी है कार इंडियन रोड्स पर, देन यू हैव टू परचेज दी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। क्लियर हो रहा है? अब यहां पर हुआ क्या कि भाई इन्होंने ये चीज बोली कि मानकर चलो कि आप इंश्योरेंस पॉलिसी आपने ले रखी है, बट योर कार इज नॉट फिट फॉर द इंडियन रोड्स, then also you are running your car, then in that case whether the insurance company is liable to pay any loss suffered by the third party or not, definitely बिल्कुल होगा। बात समझ आ रही है? यही चीज कर्नाटक हाई कोर्ट ने बोला। देखते हैं हुआ क्या था केस में। In the case, the legal manager Shriram General Insurance Company Limited versus Srimati Nagamma. Appeal was filed before the High Court by the insurance company challenging the legality of liability fastened against it. तो जो उनके ऊपर liability impose की गई थी उसको उन्होंने चैलेंज कर दिया कि साहब we are not liable for the payment of the loss suffered by the third party as the vehicle is not having the fitness certificate. तो इन्होंने बोला सर क्यों हमारे ऊपर liability impose की जा रही है? अब a tragic accident occurred on 17th of June 2013 near अंजानेया स्वामी टेम्पल ऑन NH 207। तो एक एक्सीडेंट होता है, ठीक है ना, एक दुर्घटना हो जाती है। द डिसीज्ड नंदी शपा वाज रिटर्निंग होम ऑन हिज बाइसिकल व्हेन अ कैंटर गुड्स व्हीकल स्ट्रक हिम। तो भाई ये जो डिसीज है ये अपनी साइकिल से लौट रहे थे जब इनको जो एक ट्रक ने टक्कर मार दी, ठीक है ना, और इनकी मौके और इनकी जो है इतनी बुरी तरह घायल हो गए, जब तक इनको हॉस्पिटल लेकर पहुंचे इनकी जो है डेथ हो गई। सो डिस्पाइट एक्सटेंसिव मेडिकल ट्रीटमेंट द नादी शप्पा सकम्ड टू हिज इंजरीज ऑन 31st of July। क्लियर हो रहा है? तो भाई बहुत इनका ट्रीटमेंट चला लेकिन डॉक्टर इनको बचा नहीं पाए। The dependent of the deceased filed a claim for compensation of rupees 30 lakh before the Motor Accident Claim Tribunal. The tribunal awarded compensation of rupees 30,88,209 rupees with 9% interest. 30 लाख की डिमांड की गई थी, 13.5 लाख या 14 लाख के आसपास इनको जो है अवार्ड किया गया by the Motor Accident Claim Tribunal. So the appeal was filed against the order of the tribunal before the High Court कि साहब हम बिल्कुल लायबल नहीं है। तो अब यहाँ पर काउंसिल ने क्या बोला? The counsel for the appellant for the insurance company contended that vehicle in question was operating without a valid permit and fitness certificate at the time of accident, which constituted a fundamental breach of insurance policy. बोले साहब as per the insurance policy, if the vehicle is not having the fitness certificate and is still running on the Indian roads, then the insurance company is not liable to pay a single penny. Clear हो रहा है? But and the insurance company further added that the death of Nandi Shappa was caused by cardiac arrest unrelated to the injury sustained in the accident. और उन्होंने बोला कि साहब उस बंदे की डेथ कार्डियक अरेस्ट से हुई है ना कि जो इंजरीज इनको हुई थी उससे। समझ में आ रही? अब हम क्यों लायबल है? हाईकोर्ट ने क्या बोला? हाईकोर्ट ऑब्जर्व दैट mere mention of cardiac respiratory arrest in the post-mortem report is not sufficient to disconnect the cause of death from injuries sustained in the accident. बोले जस्ट बिकॉज कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कार्डियक अरेस्ट लिखा हुआ है इसका मतलब ये नहीं है कि जो उनको इंजरीज आई थी उससे आपका कोई आप या वो इंजरीज जो है वो से रिलेटेड नहीं है। बात समझ आ रही है? While the lack of permit and the fitness certificate constituted a fundamental breach of the car insurance policy, the insurer could not avoid liability to third party claim.
इन्होंने बोला कि जस्ट बिकॉज कि उसके पास वैलिड परमिट नहीं था, फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं था, इस वजह से आप अपनी लायबिलिटी से बच जाओगे, आप नहीं बचोगे। बात समझ आ रही है? फिटनेस सर्टिफिकेट, परमिट, ये सब चीजें उस बंदे के लिए होता है कि वेदर दैट पर्सन इज अलाउड टू फॉर इंडियन रोड्स और नॉट, बट एज पर द इंश्योरेंस पॉलिसी आप तो उनको प्रोटेक्ट करते हो, ठीक है ना, कि भाई इन केस ऑफ एनी थर्ड पार्टी लॉस आई एम गोइंग टू पे फॉर योर ऑन योर बिहाफ, दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। क्लियर हो रहा है? तो ये चीज किसने बोली? ये चीज हाईकोर्ट ने बोली। और इन्होंने ये भी चीज बोली कि भाई आप एक चीज समझो, जब से उनको वो जो एक्सीडेंट हुआ था उसके बाद से उसको होश नहीं आया, और फिर लगभग 1-1.5 महीने बाद उसकी डेथ हो गई। तो दैट एक्सीडेंट शुड बी द मेन रीजन behind the death of the deceased. Clear हो रहा है? So the Karnataka High Court ruled that the insurance company was liable to compensate the dependents of the deceased cyclist despite the vehicle owner breach of policy condition. The High Court directed the insurer to pay compensation within 8 weeks, allowing it to recover the amount from vehicle owner. उन्होंने बोला कि आप व्हीकल ओनर से रिकवर कर सकते हो, लेकिन अभी तो आपको थर्ड पार्टी को देना ही पड़ेगा। बात समझ आ रही है? क्लियर है? So this is the judgment given by the Karnataka High Court. I hope the judgment is quite clear. So we are done with today's session, guys. I hope you enjoyed the session. My name is Varun Saxena, and today we covered the legal news analysis session for 11th of October 2024. In case any person is having any confusion, please let me know. Okay, so thank you so much. See you on Monday. कल सेशन नहीं होगा, आई एम ऑन लीव टुमारो, तो हम मिलेंगे फिर मंडे को, और मंडे को कुछ और इंटरेस्टिंग पॉइंट आपके साथ डिस्कस करेंगे। और इन केस किसी को कोई इशू आता है तो प्लीज डिस्कस जरूर करिएगा, ठीक है ना। और बाकी किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी दिक्कत है, रोस्ट्रम लीगल आपके लिए हमेशा अवेलेबल है। आप जब चाहे आप डाउट ले सकते हैं।